gives the front person a good kind of, like, okay, this is something that this person has approached me, I need to complete this task. So being to the point, being or using certain words, that is positive words, I can say, can this be done, let's make it happen. ये ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना, जब इंसान पढ़ता है तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसको अपने आप कुछ तो अच्छा लगता है, अपने आप उसको ऐसा लगता है, ओह दिस इज समथिंग दैट this person is expecting out from me, and I think I should do it. If you say the other side, this is, I'm telling you, this should be done at any cost. This, ये चीज क्या करती है, प्रेशर क्रिएट करती है. इट क्रिएट्स एन अनयूजुअल अननेसेसरी टारगेट जो सबकॉन्शियस माइंड को हिट करता है. तो और at times, it disturbs us as well. We are, what is it, how, why is this person speaking in such a way? So if you really want to maintain that rapport, maintain that reputation in your company, you have to choose wise words, and those wise words will take or help you reaching out to the best of your communication skill only with practice. अगर आपको ऐसा लगता है गूगल पे मैंने वाइज वर्ड्स की पूरी लिस्ट बना दी है, इस लिस्ट के हिसाब से मैं चलूंगी या चलूंगा, अभी ऐसा नहीं होता है. You have to grab as much as possibilities as possible. People don't grab opportunities. Am I? Is everyone with me? Is everyone with me on this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Very ma'am. good. Yes, ma'am. फॉर एग्जाम्पल आपके जूनियर्स है, सीनियर्स है, जो काम पूरा नहीं हो पा रहा है या टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा है, या राइट नाउ इनसाइड अंदर से आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, इरिटेटेड हो, एंड यू वांट दैट वर्क टू बी डन. व्हाट आर यू गोइंग टू डू? इन योर मेल, इन योर व्हाट्सएप चैटिंग, any way of transmitting messages or verbal conversation, you have to take a deep breath. Believe me, ये मेरे entrepreneurship world में मेरे साथ हुआ है. You have to take a deep breath and talk to that person in a very, very firm manner. When I say firm, it shouldn't be like rude or something. Firm in the sense, make sure that this work is done because this is the reason for it. The more reason you attach to something, the more weightage you have to that message. अगर उस चीज को तुम सिर्फ बोलोगे करने के लिए करना है, मतलब इफ यू साउंड के करने के लिए करना है, आपको पता है उसका इंपॉर्टेंस बहुत है, आपको पता है मुझे ये काम करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर अगर आपकी आवाज ने किसी भी तरह से उनको ये फीलिंग दे दी कि शी इज जस्ट करने के लिए करवा रही है, इट शुडंट हैपन दैट वे. यू शुड हैव टू गिव अ specific reason as to why it is so important for you to complete that task. जितना ज्यादा रीजनिंग करोगे उतना ज्यादा वाई स्ट्रांग होता है, बिकॉज रीजन इज अटैच टू वाई, बहुत ज्यादा अटैच्ड होता है. अ पर्सन विद अ वाई इज अ वेरी वाइज पर्सन. ऑलवेज गेट कनेक्टेड विद अ वेरी गुड रीजनिंग. कि कोई भी मेल हो, कोई भी मैसेज हो, आपको सामने वाले को समझाना है कि आपका मकसद क्या है. Is that? Give me 1 minute, guys. Give me. I'm so sorry. There was a disturbance from my side. Yeah. So that's what the communication part where I was coming to, कि जितना ज्यादा आप रीजनिंग आउट करोगे उतना ज्यादा वेटेज होता है और उतना ही ज्यादा अच्छे से लोगों को समझ में आता है. कमिंग टू द पार्ट वे सीनियर्स हो, जूनियर्स हो, केबिन में आपका वन ऑन वन डिस्कशन हो रहा है, फ्लोर पे आपका वन ऑन वन आपके जूनियर्स के साथ डिस्कशन हो रहा है. योर टोन शुड बी एब्सोल्युटली जेनरिक एज फार एज व्हेन यू टॉकिंग टू योर जूनियर्स और सीनियर्स. मैं आपको ये बताती हूँ, सीनियर है, he's someone absolutely senior, I have to talk to him in absolute respectful manner. Respect तो आपकी बोली से भी उसको समझ में आ जाएगा, दिखाने की जरूरत नहीं. रिस्पेक्ट आपकी बोली से भी उनको समझ में आ जाएगा, दिखाने की जरूरत नहीं. क्या होता है ना, ये जो माइंड अपना है, जो कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है,
बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. But at an initial stage for 5-10 years of Surbi saying is I'm not audible. Am I audible to everyone else, Surbi? तो हाई लेवल का अटेंशन आपको अगर चाहिए, हाई लेवल का प्रोफेशनलिज्म आपको अगर चाहिए, तो आपको सबसे ज्यादा ऑथेंटिसिटी, आपको सबसे ज्यादा जेन्युइन वे में काम करने की जरूरत है कि आप यू जस्ट स्पीकिंग आउट योर हार्ट, यू जस्ट सेम विद दिस पर्सन एंड दिस पर्सन एज वेल. बिकॉज ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. मैंने when I was working into a bank, I was working in one of the topmost investment bank, that is Deutsche Bank, जहाँ पे मेरा रिजेक्शन हुआ था. एंड उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था, जब मुझे रियलाइज हुआ that what were the key factors that I really need to work on. Those were not my weaknesses. Those were not something which I was failing in. Those were those were kind of a tube light into my life that actually gave me a light towards where I need to work on. And it is not necessary that जिस चीज पे आपको काम करना चाहिए वो आपका वीकनेस है. No. No. I'm telling you this, that is not. ये जो चीजें हम हमेशा हर चीज को, ये जो वर्ड्स का खेल होता है ना, ये वर्ड्स हमारे दिमाग को बहुत अफेक्ट करते हैं. हाँ वो और भी पता नहीं, वो मिल नहीं रही है और हेलो, कितने डब्बा है ना ये. हेलो. So it is very important for us to play with the words and to actually bring out the best of the effective words that are possible. उसमें ही हमारे सबसे ज्यादा स्मार्टनेस रहेगा, उसमें ही ज्यादा सबसे ज्यादा हमारा सक्सेस उसी में बेस्ड करता है. कम्युनिकेशन इज द की. You might be absolutely talented technically, you might be absolutely talented in manufacturing products or services and everything, but if you're not communicable effectively with your juniors, seniors, promoters, manufacturers, producers, you will lose out on everything that you're blessed with. Communication is the key. Communication is the key. आप चाहे परसेंटेज थोड़ा एक कम ला दो चलेगा, बट जहाँ पे वाइवास की बात आती है, जहाँ पे इफेक्टिवली या इफेक्टिवली ठीक है, इट्स अ वर्ड, बट अदरवाइज कितना ज्यादा आप अपने थॉट्स और व्यूज ला रहे हो. लाइक द सेम वे दैट आई एम टॉकिंग राइट नाउ. आई हैव नॉट रटिफाइड एनीथिंग, आई हैव नॉट said something or saying something out from my notes or some speech or something out there. I will always speak out what are my thoughts about the same, what is my experience saying about the same, what have I learned from my drawbacks, what have I learned from where I was not excelling. तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ इसलिए शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि कल जाके कुछ भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आप में आ गई जिसमें आप में पोटेंशियल बहुत है, बट जस्ट आप बोल नहीं पा रहे हो ठीक से. एंड दैट इज द टर्निंग पॉइंट फॉर यू. बोल नहीं पा रहे हो और आप लूज आउट कर दो इसमें, तो कैसा होगा. इसी की ट्रेनिंग के लिए कॉलेज वाले हो या हम जैसे ट्रेनर्स जो एक्सटर्नली बच्चों की लाइफ में काम करते हैं, हमारा सबसे बड़ा रिक्वेस्ट लोगों से यही होता है, grab as much as possible opportunities, as much as possible opportunities, because that is the key. That is the absolute key. Give me 1 minute. I'm just going through the points. If I've covered up with that, I'm going to come to the question answer session. Okay. If you talk about a conversation as well on the call, if you're calling to your juniors or seniors and if you want to deliver something, if you want to inform them about something, if you want to make sure that the work should be done, as soon as your call, as soon as you start with the call, a wish like good morning, good afternoon, good night, good evening, a wish is fine within 2 seconds. You should directly come to the point. ये जो चीज हम करते ना, hey how are you, I'm good, how are you doing, I'm absolutely fine, ये चीज हमें स्टार्टिंग में नहीं करनी है. ये चीज हमें स्टार्टिंग में नहीं करनी है. This shouldn't be done. Directly come to the point. This call was regards to business. Is it making sense, everyone? Is everyone understanding what I'm trying to say? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Very good, very good, very good. Happy to know that. Okay. So as much as possible opportunities we have to grab, but on the other side we have to make sure that telephonic conversation में हमें ज़्यादा beat around the bush नहीं करना है, सीधा point पे आना है wishes के बाद.
At the end, if you have time, you can ask. Rest how things. So yeah, this happened, that happened, I'm stuck with something from that. That is your bloody work and not somebody else's work. So why are you crying on that work and discussing it with someone who's not even going to make any difference into that work where you're stuck with? So rather come directly to the point. The more to the point conversation, the better respect we earn and the better position that you are into, that people will start conversating with. Because आप किसी का time waste नहीं कर रहे हो, आप beat around the bush नहीं कर रहे हो. We are not YouTubers, right? You're not YouTubers कि आपको एक my name is Manisha, Manisha is my name, वही की वही बात वापस दोहरानी है, वही की वही बात यहाँ से बोल. ये बहुत बार हमारे पास हमारे YouTube चैनल पे होता है. Whenever अभी हमारा YouTube चैनल actually Dream Hunt India नाम से, तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा बीट अराउंड द बुश करना पड़ता है. बिकॉज जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, उसमें बीट अराउंड द बुश का कंसेप्ट इसलिए होता है यूट्यूब पे बिकॉज रेगुलर हैमरिंग इज इम्पोर्टेंट. बट राइट नाउ इन सेशंस एंड एवरीथिंग और इन मीटिंग्स और इन मेल्स एंड एवरीथिंग यू कैन नॉट रिपीट द सेम थिंग दैट यू वांट टू कन्वे. वो का वो हम नहीं रिपीट कर सकते. प्लीज प्लीज ये आपके दिमाग में डाल दो. टेक इट इन राइटिंग, जस्ट राइट इट डाउन व्हाटएवर आई एम सेइंग राइट नाउ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. We don't have time to lose out. We don't have time. Okay. Starting with the question answer session, we just have approximate 45 to 50 minutes left. I want this rest session to be absolutely interactive, guys. So jo kuch bhi agar there are people who are doing something else right now, there are people who are moodless, there are people who have certain questions but are not opening up, there are people who are underconfident. This is the right time for you to ask me questions. Because I really, or nobody out there has time to judge you on it. We are here to have a group discussion. This is a practicality that I'm coming into right now in the last 45 to 50 minutes. Chalo, first question. Who's going to ask me the first question? Hello. Good afternoon. Good afternoon. Who's this? My name is Dishti Aloda. Hey, Dishti, tell me. Ma'am, my question is, at the time of GD, sometimes we don't know about the topic very much. Then what we can do and how we can give our best at that time. If you don't know, whatever you know, but थोड़ा पता है, confident हो उस पे आप कि भाई ये चीज पता है, मैं इस पे confident हूँ तो ही बोलूँ. Half knowledge most of the time poisonous होता है. अगर आप confident नहीं हो, half knowledge आपके पास है, but उस छोटी सी knowledge में उसमें भी आप confident नहीं हो, तो please बोलो मत. Do not say. Speak only what you know and you're confident about. It's as simple as that. Speak only what you know and you're confident about that. That this is what I'm damn sure about. और वो आपको डिस्कस करना जरूरी, वो आपको डिलीवर करना बहुत ज्यादा जरूरी. And a good no is anytime better for any HR. A good no. If you don't know, I don't know. If you know, this is what I know. That's it. उसपे भी नो में भी ज्यादा बीट अराउंड द बुश वगैरह नहीं करना. ग्रुप डिस्कशंस में बीट अराउंड द बुश नहीं करना. Just put forth your thoughts and ideas. Put forth your views about a particular topic. That's it. हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही तो है that हम चाहते हैं कि मैं जितना ज्यादा बोलूंगी उतना ज्यादा लोग इंप्रेस होंगे. ग्रुप डिस्कशंस में ऐसा नहीं होता कि वो ग्रुप डिस्कशन है, उसमें हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, राइट? अगर ऐसा कोई स्पीच वगैरह है या ऐसा कोई सेमिनार वगैरह है जिसमें लाइक फॉर एग्जांपल दैट आई एम डूइंग, आई हैव टू स्पीक फ्रॉम ऑल द वेज. आई हैव टू मेक श्योर दैट वो जो छोटी सी चीज मैं आपके दिमाग में डालना चाहती हूँ वो आपके दिमाग में रहे. एंड दैट्स व्हाई आई हैव टू स्पीक दिस वे, दैट वे, दिस वे, दैट वे, व्हाटएवर बी. But if you talk about group discussions, you have to be to the point, absolutely to the point. But speak only what you're confident about, nothing else. Okay. Next question. Good question. Thank you, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Who's this? Ma'am, it's Surbhi. Surbhi, tell me. Ma'am, my same question is, if we don't know much about the topic, but someone already said that, should we say or not? Someone already said? Sorry? Ma'am, just like, ma'am, if we don't know the topic very much, but we know only 2 or 3 points, but someone already said, should we say or not?
You can repeat that. You can, I mean, when he's saying that किसी ने जो जो आपको पता है वो already किसी ने बोल दिया है, और अगर जब आपकी chance आ रही है and you have to speak, you can definitely repeat. You can definitely, because it doesn't mean that, it doesn't make sense कि यार किसी ने बोल दिया इसकी वजह से मुझे कुछ दूसरा बोलना, ऐसा नहीं है. कुछ दूसरा है तो जरूर बोलो, बट अगर कुछ नहीं है और आपका व्यूज और थॉट्स भी उस इंसान जैसा ही है, you have to speak. You have to speak. There is no harm in that. You have to speak. Okay, thank you, ma'am. Good Anybody afternoon, else? ma'am. Yes, Good afternoon. Yes, ma'am. My question is, at the time interview, the first basic question is the interviewer ask, tell me about yourself. So, how would I describe myself? It looks more attractive and more good way to convey them to myself. Speak everything that is not there in the resume, except your name. Speak everything that is not there in your resume, except your name. मेरा कहने का मतलब इसमें ये है, a lot of people say my name is Manisha Bhati, I've done my graduation, post-graduation from Pune University, I've got this much percentage, I stay with my family, I have, my siblings are there, this one is doing that, my father is doing this, my mother is a housemaker, homemaker, then my passion is this, my strength is this, my weakness. अरे ये सब already resume में है. Say something that we don't know. Yes, ma'am. Say something that we don't know. Hello? Sorry? Ma'am, yes, ma'am. That's why I'm asking you this question. Yeah, say something Lots that you of don't things know. in resume. Absolutely, absolutely. तो आपको वही चीजें बोलनी है जो लोगों को पता नहीं है आपके बारे में. For example, good afternoon, my name is Manisha Bhati. To tell you about me, I am an absolutely passionate speaker. Then that person will say, okay, what is it exactly about speaker? Okay, there are different types of speakers. कहने का मतलब ये आपके इंट्रोडक्शन में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आगे वाले की. When the front person is again questioning you something, that means he's curious to know more about yourself. Believe me, ये मेरे साथ हुआ है और ये आज भी होता है. Whenever I'm going into a lot of events, into a lot of workshops, I enjoy introducing myself because a lot of people say, this business I run, this I do. If any collaborations, let's work out together. My name is this. We are based out of this. Everything ये वो. ये सारी चीजें तो मुझे आपकी वेबसाइट पे भी दिख जाएगी, right? Yes, Tell ma'am. me something that I don't know, or I won't be able to know in future. That is where I say that, hello, my name is Manisha Bhati, and we are here to inspire people as far as their communication skills are concerned. तो जब हम ये बात पूछती, मैं ये जब बात बोलती, मेरा 90% ऑफ द टाइम एक और क्वेश्चन आता है, क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन लोगों के तरफ से हमें आता है. ओके, कम्युनिकेशन, व्हाट एग्जैक्टली? बिकॉज देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, वर्बल हो, कितने सारे कम्युनिकेशन. व्हाट इज इट एग्जैक्टली कि जिससे तुम ट्रांसफॉर्म और इंस्पायर ही कर दो लोगों को? दैट इज वेयर द एचआर शुड अगेन, even if he doesn't ask, it's okay, but your job is to make it to the point. Your job is to say something that is not there in the resume. Is everyone with me? Are you understanding what I'm trying to say? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So if you talk about introduction, it shouldn't be of more than 2 to 3 sentences. That's it. First sentence तो आपका नाम पे आ गया. Second or third sentence, you tell about what you're very much passionate or what is your ultimate goal. वो भी आप बोल सकते हैं आपके introduction. Okay, ma'am. ठीक है? Apart Thank from you, ma'am. resume, say everything except your name. Thank you. Okay, ma'am. Thank you so much. Welcome. Next question. Good noon, ma'am. I'm Divi. Divi. Hi, Divi. Hello, ma'am. Tell me. Ma'am, my question to you is, already facing a rejection in life is already very hard to accept. So, if suppose HR, a senior HR is rejecting us, so do we have a right, or in a right way? Hello, I didn't get you. Sorry. Can we? Your last sentence. Divi, hello. Yes, ma'am. Yeah, आपकी आवाज नहीं आ रही थी. फिर से बोलिए. Okay, ma'am. I repeat. Already facing a rejection in life is very hard to accept. So my question to you is, if suppose an interviewer is rejecting us, do we have a right, or in a right way, can we ask them after the discussion or after the PI round, like what were the points in which we were lacking, or
because there's always a scope of improvement. So after knowing the reasons why, we can work on that for the next chance. So can we ask them? One-on-one basis, you can ask them. Definitely, you can ask them. But rather, my suggestion to this is that rather analyze yourself where I might Okay. have gone wrong, or discuss it with somebody. I'm not saying that आगे वाला जो बोलेगा उसको दिल पे लगा के बैठ जाओ कि यार नहीं यही मेरी गलती थी. No, rather analyze yourself, because most of the HRs, even if you mail them or one-on-one basis पे उन पे फोन पे ही बात करोगे ना, open up नहीं होते. I don't know what problem do they have with that. If I would have been an HR, मैंने बहुत अच्छे से इस चीज को cover up किया होता. But there are certain HRs, there are a variety of HRs into the market. So my take on that is that you give your best. You give your best. आपके जो efforts है उसमें कोई कमी मत रखो आपकी तरफ से. But while interview कमी रह जाती है, let me tell you that also. कि वो जो थोड़ा सा nervousness है, वो जो natural nervousness है, वो हर किसी में होता है, वो आज मुझ में भी है. Even if I'm being an intermediary between both the parties, I still have the nervousness to talk to them. थोड़ा सा रहता है, and which is natural and which is good for us as well. तो इस कभी कभार हम इतने भी profound या इतने भी verbal वैसे नहीं होने चाहिए कि भाई हमारा किधर दूसरी तरफ ही हमारा conversation चले जाए. It shouldn't sound like Yes, that. ma'am. So that is why a healthy communication is important. And if you talk about asking them, as I told you, one-on-one, if they're open, please ask them. If they're not, most of the HRs are not. So my take on that is please analyze yourself. Efforts Yes, इतने दो ना. Rejection हो गया, assume the rejection is done. First rejection हुआ, second rejection हुआ, 10th rejection हुआ, चलो 10th rejection हुआ, तो भी आपको अपने आप में एनालाइजेशन चालू रखना. सिलेक्शन हुआ तो भी चालू रखना है कि इस बार कौन सी ऐसी चीज थी जिसकी वजह से मैं सिलेक्ट हुई, जो मैंने मेरे ग्रुप डिस्कशंस में एनालाइज किया. मेरे ग्रुप डिस्कशंस में मोस्टली मैंने यही चीज एनालाइज की थी, दैट आई वाज अ गुड लिसनर. ऑफ कोर्स फर्स्ट उसमें भी थी, बट इस बार मैं और ज्यादा अच्छी गुड लिसनर थी. और जब सबसे ज्यादा गुड लिसनर में हुई ना, तो मेरा जो दिमाग जो भी बुलेट्स फेंक रहा था बैक टू बैक ओवर थिंकिंग कर करके, उसको मैंने दबाया. ओवर थिंकिंग उस वक्त करने का टाइम नहीं होता है. दैट इज व्हाट आई डिड एट दैट टाइम, एंड दैट इज व्हाट आई लर्नड. That is why, because I was selected in the second interview. My request to every one of you is that only, that whenever there is a group discussion, be a good listener. Okay, listen. Everybody, what are they saying? But suno sabki, karo man. Listen to everyone, but speak out your heart. Listen yes, to ma'am. everyone, but speak out your heart. It will take you a long way. Not just for the first group discussion, not just for the second GD, forever in life, forever in life. When I talk to a panel of directors, board of directors of the different companies, while knowing about the strategical, कैसे strategically वो लोग grow करना चाहते हैं, उनमें कौन से ऐसे issues हैं, कौन से ऐसे improving opportunities वहाँ पे है जिस पे हम काम कर सकते हैं collectively. I be a very good listener. I talk to every board of directors. I take views of everyone. I listen to everyone. I let them complete. Of course, there are people who जो 5 का 10 मिनट लगा देते हैं. Of course, there are people जो 5 सेकंड में एक बात खत्म कर देते हैं. उन लोगों से ही मैं काफी कुछ सीखती हूँ. उन लोगों से भी मुझे काफी कुछ समझ में आता है. सुनती सबका हूँ, बट व्यूज मेरे होते हैं. व्यूज मेरे होते हैं. But that doesn't mean that we don't listen to what people are saying. We have to listen to what they're saying. That is my take on that. Okay? Yes, ma'am. Thank you. Most welcome. Yes. One more question. Next question, guys. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Who's I'm this? Kamya Gupta. Hello, Kamya. Ma'am, I want to ask you, most of the content revolve in our mind, but I don't speak in group discussion because what is right and what is wrong. So how can I reduce it? Sorry, I didn't get you. Your voice is breaking. Kamya? Ma'am, most of the content revolve in our mind, but I don't speak in group discussion because what is wrong and what is right. So how can I reduce it? Don't you think that simply you're doubting yourself? पता नहीं मैं कुछ भी बोलूंगी कहीं वो गलत निकल गया सही निकल गया तो दैट इज व्हाई कंटेंट पे आपका कॉन्फिडेंस होना जरूरी है. जो भी कंटेंट आप डिलीवर, आपको पता है ये चीज मुझे मालूम है, बट आई एम 100% श्योर दैट दिस इज राइट, तो उसको डिलीवर करने में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? व्हाट डू यू थिंक?
Are you understanding, Kamya? Yes, ma'am. अगर आपको डेफिनेटली पता है ये जो 2-3 सेंटेंस है या ये जो 2-3 चीजें इस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में मुझे पता है, 100% मैं कॉन्फिडेंट भी हूँ, मैंने गूगल पे देखा है या मैंने स्क्रीनशॉट लिया है उस चीज का, मैं कॉन्फिडेंट हूँ उस चीज के बारे में, तो डिलीवर करने के लिए मैं क्यों हेजिटेंट हो रही? किसी ने क्रॉस क्वेश्चन भी किया तो मेरे पास तो प्रूफ है. I have actually gone through something and I have actually seen that this is the fact. Why am I so underconfident about this? Take it the other way. I know this is a particular thing, but यार बहुत सालों पहले सुना था, ये बहुत सालों पहले देखा था, and I'm not confident about it. Should I deliver or not? इसमें आप क्या कर सकते हो? You can put forth a word which can defend you or which can save you. Like, I think this might be the same. I think it can be done this way as well. तो जब आप ऐसे वर्ड्स के साथ पॉजिटिव वर्ड्स या ऐसे प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करने वाले वर्ड्स को जब हम अपने वोकैबुलरी में डालते हैं ना, तो हम सेफ रहते हैं, हम डिप्लोमेसी सीखते हैं इससे. इट हैज हैपेंड पर्सनली विद मी एज वेल. बहुत बार ऐसा होता है, करंट सिनेरियो में भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जिसमें मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली बात करती हूँ, नो डाउट, बट इनसाइड बीनीथ आई नो दैट ये चीज का मुझे आधा नॉलेज है, बट बोल तो देती हूँ, लेट मी ट्राई एटलीस्ट. बट गेस व्हाट, the success ratio is high in this because at least I am speaking. कुछ गलत हो सकता है, इसलिए वो जो अंडर कॉन्फिडेंस आपका है ना कि भाई पता नहीं मैं इसमें राइट हूँ या नहीं हूँ, पर बोल के देखती हूँ. बोल के देखने के वक्त आपको वर्ड्स ऐसे यूज करने हैं जिसपे कोई आपको गन पे ना रखे कि यार ये तुम्हें कहा था. ऐसा नहीं होता. When you say I think this might happen, this might जब आप बोलते हो ना, तो आप थोड़े से आपके चांसेस आप यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस 100% है. आई एम डैम श्योर अबाउट दिस एंड दिस इज व्हाट इट इज. जिस तरह से आप डिलीवर करते हो ना, अगर ये चीज आपने ऐसे बोली ना, आगे वाले का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. गॉड, शी इज सो कॉन्फिडेंट दैट मींस इट इज राइट. रेशो हाई होता है. सो प्लेइंग विद वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द मोर यू प्ले विद वर्ड्स, द मोर यू आर कम्युनिकेबल, द मोर यू आर एबल टू कन्वर्सेट विद पीपल. दैट इज वेयर कम्युनिकेशन इज हैपनिंग. व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज द वन थिंग दैट वी आर डूइंग इन दिस? वी आर टेकिंग एक्शन. एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है. हम क्या करते हैं, हम एक्शन नहीं लेते. ग्रुप डिस्कशंस हो, इंटरव्यू क्रैकिंग स्किल्स वगैरह हो, या किसी भी तरह का कम्युनिटी फेयरवेल हो या इवेंट्स हो, वर्कशॉप्स हो, कुछ भी हो, हम एक्शन नहीं लेते हैं. हम बोलने का जो एक्शन है कि लेट मी स्पीक, चलो लेट मी टेक एन एक्शन टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन, हम वो नहीं करते. गेटिंग माय पॉइंट? राइट नाउ जितने भी लोगों ने Yes, मुझे ma'am. क्वेश्चंस पूछे हैं, एवरी पर्सन हैज टेकन एन एक्शन, राइट? Every person has decided I want an answer to this question. You have taken action. Everybody's with me? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Next question. Next question, guys. Hello. Hello. Dushyant Jain, can you please ask me a question? Dushyant Jain is there. Dushyant Singh Parihar is there. Any questions, guys? Hello. See, the person who asks questions, this is the right time for you to speak up. To speak up as much as possible, because this is something practically you're facing the camera and you're asking the question as well. Please, I would request everyone, ask questions. पूछो. I'm damn sure आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा रिवॉल्व हो रहा है, and जिसका आपको solution मिल सकता है, जिसको आपको एक boost मिल सकता है. Yes. Anybody's there? Ritambra. I received a question from Dushyant Singh. Dushyant says, what solutions does Dream Hunt India provide?
Dream Hunt India is an absolute premier institute which precisely works on the skill sets of individuals. We work on the mindset of people. We believe that nothing is there about practicality. Like, for example, very first thing is to transform your own life. You have to transform your own life. We just show you a path. Second thing, you have to take an action for yourself. You should show that willingness to really do something in your life. थर्ड थिंग इज दैट अगर आपको कुछ ना कुछ लाइफ में अगर सच में अचीव करना है, आपको अगर सच में लाइफ में कुछ तो अचीव करना है, तो कौन सी चीजें हैं जो आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी? ये सारी चीजों पे हम कलेक्टिवली काम करते हैं, जिसमें हम यंगस्टर्स, स्पेसिफिकली कॉलेज स्टूडेंट्स एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं वाया वर्कशॉप्स, वाया वन-ऑन-वन कोचिंग, वाया एवरीथिंग आउट देयर. अभी रिसेंटली हमारा एक बहुत अच्छा कोर्स चालू है, ongoing every weekend it is going on, which is related to camera skills, how you can effectively talk in front of the camera, what are the things that you should do and what are the things that you should try to avoid in front of the camera to make your conversation very much effective. Because I suggest a lot of people on LinkedIn as well, अगर आप LinkedIn पे नहीं हो, प्लीज आपका प्रोफाइल बना दो, प्लीज LinkedIn पे आपके कनेक्शंस बढ़ा दो. जैसे ही आप कनेक्शंस बढ़ाते हो तो जो डोंट जस्ट आपका फ्रेंड वो जो लिस्ट होता है उसको बढ़ा के मत रखो, हर एक न्यू कनेक्ट को प्रपोजल भेजो. कैन वी हैव अ कॉन्वर्सेशन वाया Zoom, because Zoom is absolutely free. Google Meet हो, WhatsApp calling हो, but it should be face to face interaction. It should be something wherein you can see that person and that person can see you. LinkedIn पे जितना हो उतना आप धूम मचा दो, because it is the future. There is Glassdoor as well. ठीक है, इन सारी चीजों पे ध्यान दो. थोड़ा सा Instagram and Facebook को साइड में रखो, थोड़ा सा, but LinkedIn is very important. I would tell you that Twitter भी थोड़ा सा साइड में रखो. LinkedIn and Glassdoor is very important for you to know that market में opportunities कितनी है, market में supply demand कितना है, कौन सी चीज का है, everything. Okay, so if anytime any issues related to skill sets, anything, Dream Hunt India's website is dreamhuntindia.com. You can anytime contact us. My contact number I'll give it to you guys, so that anytime my team will get back to you on the same. Okay, any other question? Any other question, guys? Yati Garg says, good afternoon, ma'am. During the group discussion, when there is a debate and communication between people, how should we put our point at that time? If you think that those people are going to shut their mouth and those people are going to stop, ये हर जगह नहीं होता. Most of the time, people will continuously speak. You have to wait for some time. Even if there is a 1 or 2 seconds wala gap, at that very moment, you should raise your voice and say, I have something. And it shouldn't be like, I have something to say about this. No, it's not like that. I have something to say. Your first 2 to 3 words should be something which grabs the attention of the people, so that people listen to what you have to say. A very simple trick that I have given you on this is this. Okay? Yati, I hope you understood this. Then is Nayansi Gupta says, how can we be control our nervousness before interview? As I told you, thoda sa nervousness jayaz hai. It's absolutely fine. No harm in that. Absolutely fine. No harm in that. But interview के पहले अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, nervousness वगैरह हो रहा है, you have to take a deep breath. You just have to focus on your. I'm not even saying that you have to go with a target. नहीं crack करना ही है या pass करना ही है. No, you have to be honest towards yourself. You have to be absolutely authentic to whatever question they ask. Any question that you think that you have no information about it, so I'm really sorry, I don't know about this, but yes, I will get back to this and make sure that I know about this. But right now, I have no information about it. Whatever you know, make sure that there is gestures. Your hands are not going above your hands, and you have gestures while you explain. ये gestures initially आपको थोड़ा सा odd लगता है ये वो, but अभी जैसे जैसे आप बात करोगे ना, it बहुत ज़्यादा synchronization आपकी आवाज़ का और ये gestures का होता है. Just the way I'm having a voice modulation right now, the same way, with practice, आपको समझ में आएगा इसका importance क्यों जरूरी. Okay. Next question. Do length of content do matter or just deliver to the point? Absolutely to the point.
I would like to say be absolutely to the point. जहाँ पे कोई चीजों में आपको ऐसा लगता है कि you know इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है और इसको रीजनिंग आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, रीजन को इमीडिएटली अटैच करो, टू द पॉइंट को इमीडिएटली अटैच करो, 3 से 4 सेंटेंस में फिनिश इट ऑफ, 3 से 4 सेंटेंस में फिनिश इट ऑफ. द मोर simpler you make the conversation, the better people are related. Any questions, guys? Good afternoon, ma'am. Could you please suggest as to how to prepare for upcoming placement in the new virtual era? First, let's take Harshita Chabras. Could you please suggest as how to prepare for upcoming placement in this new virtual era? Harshita, can you answer me one question? What do you think? What has changed? Harshita? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What has changed? Ma'am, actually the physical जो environment था वो virtual environment हो गया है. That's the change. But interview भी तो आपको face to face सिर्फ via camera देना है ना, सामने ही बैठे हो आप उनके. What do you think? But still, ma'am, जो physical environment होता है वो ज़्यादा effective रहता है. How effective it is? What do you think? कौन सी ऐसी emotions होते हैं या कौन से ऐसे confidence वाले feelings होते हैं जिसमें आपको एक different feeling आती है? What do you think? Face to face में ऐसा क्या होता है? Ma'am, sincerity. Sincerity आपको कैमरा के सामने भी रहेगा, right? What do you think? क्योंकि क्या हो रहा है ना, this is the question that many people ask and it's absolutely generic question. I appreciate you for this question because I'm sure that आपने ये feel किया and that's why you're asking it. And ये जो question है, ये आज जो 100 students attend कर रही है, सबका question है. It's not just you. You have just done something different by answering this question, asking this question to me. So I appreciate that. Believe me, change इतना कुछ हुआ नहीं है. When you're talking about face to face interaction, I know lifestyle वगैरह लोगों की change हुई है, time investment अभी कम हो रहा है, money का investment थोड़ा कम हो रहा है, लोगों की jobs जा रही है, but बहुत सारे लोगों को jobs मिल रही है, बहुत सारे लोगों को jobs मिल भी रही है. प्लेसमेंट के ईरा में ऐसा कुछ, वर्चुअल ईरा में ऐसा कुछ नया हुआ नहीं है. In fact, it's a blessing actually, I can say, sitting in your own comfort, you are talking to 2 to 3 people जो वही क्वेश्चंस पूछते थे आपको फेस टू फेस. I'm sorry. वही क्वेश्चंस वो आपको पूछते थे फेस टू फेस. वर्चुअल ईरा में प्रिपरेशन आपको यही करना है. Make sure that your outfit is good. You are simple. If you think, a lot of people ask me, ma'am, does looks matter? Guys, it is bullshit. Presentation, when we teach about presentation, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने कितना ज्यादा अपने आप को अप टू डेट वगैरह रखा है. प्रेजेंटेशन आपके बोली से समझ में आता है. आपकी पर्सनालिटी इज नॉट नेसेसरी दैट आपके कपड़ों से समझ में आता है. नॉट नेसेसरी, इट्स अ पार्ट. पर्सनालिटी इज पार्ट, कपड़े इज अ पार्ट. आई डोंट डिनाई दैट. इट इज वन ऑफ द way you verbally take out your words, your sentences out from your mouth. Getting? तो सबसे बड़ा, अगर आपको सच में वर्चुअल एरिया में कुछ तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए लाना है, तो आपको कैमरा फ्रेंडली बनना पड़ेगा. कैमरा फ्रेंडली ये कंसेप्ट मार्केट में नया आया है, बट मेरे हिसाब से और बहुत सारे लोगों के जो क्लाइंट्स हमारे होते गए हैं, अभी हर किसी के लिए ऐसा है. This is the best thing this pandemic has done to us. This is the best thing this pandemic has done to us. Yes, ma'am. Everything has a pros and cons. Everything has, and pandemic ने cons तो बहुत कुछ किया है, but if you see pros, मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं. I know a lot of people have lost their lives. I know a lot of families are suffering. I know we are blessed. We at least have a roof and a timely meals that we're having. I'm very much grateful for that. Everyone is grateful for that. But on the other side, there are n number of pros that this pandemic has given us. It's just that we are not accepting
accepting it. We are being too much rebellious or stubborn towards our previous life. That was 5 to 6 months back. तो वर्चुअल ईरा में कैमरा फ्रेंडली होना बहुत ज्यादा जरूरी है. आई एम रिपीटिंग दिस, ये मार्केट में कुछ तो नया इसलिए आया है क्योंकि लोगों ने कैमरा फेयर डाल दिया, जिसके ऊपर फिर हम जैसे लोगों ने काफी सारे कोर्सेज वगैरह बना दिए कि कुछ नहीं है. जो एक फेस टू फेस इंसान के साथ मेरा इंटरेक्शन लाइव हो रहा था, वो सिर्फ एक बीच में अभी एक कैमरा आ गया है, कुछ नया नहीं हुआ है. How many of you agree with this? How many of you agree with this me on this? कि बीच में क्या है, सिर्फ एक कैमरा ही तो आया, राइट? सिर्फ एक फोन बीच में आया है मीडियम बनने के लिए, एक दूसरे को देखने के लिए. और केबिन में व्हेन आप जब एचआर से बात कर रहे थे, सिर्फ वो फोन बीच में नहीं था. पर लाइव इंटरेक्शन तो इसमें भी हो रहा है ना. हम थोड़ी कुछ रिकॉर्डिंग करके भेज रहे हैं केवल, हम तो लाइव इंटरेक्शन कर रहे हैं, राइट? आर यू गेटिंग एवरीवन? हेलो? Yes, ma'am. Guys, are you understanding what I'm trying to say? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Then I received a message from Monica Ahuja. Ma'am, can we get job as a fresher in this COVID pandemic? Of course you can get. Of course you can get. You have to make a profile on LinkedIn. You have to make a profile on Naukri.com, Monster.com, Shine.com. पैसा मांग रहा है तो please मत दो. Do not invest a single penny on that. And yes, and I would suggest कि आप हो सके तो आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस या आपको एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह में जाना है या कॉर्पोरेट वर्ल्ड वगैरह में जाना है, तो आप इंस्टाग्राम पे भी आपके फॉलोअर्स बढ़ाइए और उस पर कुछ ना कुछ ब्लॉगिंग वगैरह कीजिए आपके आपके फ्रेंड्स या आपके नियर एंड डियर वंस आपको जानने के लिए. आई थिंक इंस्टाग्राम इज ऑल्सो अ वेरी इफेक्टिव थिंग. फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. That is Manisha at _ dreamandindia.com. Dreamand India. Okay, I have one more question. Kapil says, ma'am, what would you have done if Dreamand India wouldn't have worked out? And why are you so interested to improve the other individual's personality? A question which is very near to my heart and because of which the birth of Dreamand India had taken place a few years back, and we are still, believe me, we are still rocking. We are rocking only because we always gave a heads up to all the rejections that we have faced. You won't believe, initial 2 to 3 years, the ratio of rejection and selection was 99:1. 99 times people used to reject us. That level of failures and rejections I individually have faced. Of course, this topic was something different, but since the question has been asked, my take to everyone over there is that जितना ज्यादा रिजेक्शंस, जितने ज्यादा फेलियर्स आप फेस करोगे, उतना ही ज्यादा आप आगे जाओगे लाइफ. आप अगर एक्सपेक्ट करते हो कि बॉस आई वांट अ वेरी स्मूथ लाइफ, I want a very smooth professional life or entrepreneurship life or any kind of life, you won't learn anything. And the person who doesn't learn anything, his life becomes stagnant. And a stagnant life becomes a very boring life after a few years. Let me give you my example. I was someone who started my journey at the age of 17, 18. मेरे ही कॉलेज कैंपस के बाहर खड़े रह के मैंने ही पैम्पलेट्स बना के, स्मॉल पैम्पलेट्स इन राइटिंग एंड साइबर कैफे में थोड़े पैम्पलेट्स बना के, पता नहीं था कैसे पैम्पलेट बनता है, तो भी मेरी सारी डिटेल्स डाल के मैंने बांटना चालू किया. I was actually standing in front of the campus of my school, my college, and distributing pamphlets. I had seen those pamphlets falling down into my own feet. I had seen those pamphlets. People were taking it from my hand, and people are throwing in front of me only. 1-2-4 steps आगे जा. Do you really think that वो छोटी छोटी चीजें, ये तो just कुछ भी नहीं है, बट ऐसी बहुत सारी चीजें हुई है जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप वर्ल्ड में भी डोर टू डोर जब मैं गई तो मैंने काफी सारे रिजेक्शंस फेस की. You know what? People said that you are absolutely presentable, you are so well while speaking, but we will get back to you. हर एक फेलियर में, हर एक रिजेक्शन में I was depressed. We were broken. Initially, it was started just by me and my partner. My partner is Sridhar.
So he was the operations head. He used to take care of the absolute content and financials and everything. But I was someone who was traveling door to door, office to office, university to university, and people were just rejecting us like crazy. दो चीजों के लिए मैंने सबसे ज्यादा इस चीज को अपनाया है और इस चीज पे ही मैं लाइफ टाइम काम करूंगी मोस्ट ऑफ द टाइम, इज बिकॉज मेरा जो रीजन है इससे अटैच होने का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. Why is strong, and a person with why is very wise, as I told you. मेरा जो why है इसलिए इतना strong है because मैंने बहुत लोगों को सफर करते देखा है. मैंने बहुत सारे talents और passions को destroy होते हुए देखा है. मैंने काफी सारी girls को देखा है. They are absolutely settling down after their graduation, post-graduation, thinking that I will get a high package guy, or irrespective of what my package is, or irrespective of my decisions of my life are on. And that is where our women entrepreneurship empowerment and girl empowerment sessions come into play. Because I really want this ratio to take a 360 degrees change on why women leaders are less, why women CEOs, why girls are not coming out from their comfort zone, why girls cannot, live for themselves, why girls cannot take their own decisions, why girls are, following the society, following the societal mental pressure, parental pressure, why aren't they taking their own decisions? If you talk about my own personal life, I have suffered like crazy. But that, just because of all those things, I am here today. Just because of all those things, there are so many accolades, there are so many awards and recognitions that I and my team get nationally and internationally as well. And guess what? It has happened within a span of 6 to 7 years. That's it. तो लाइफ में रिस्क उठाना चालू करो, लाइफ में रिजेक्शंस को फेस करना चालू करो. आई एम टेलिंग यू रिजेक्शंस आपने फेस कर दिए ना, और फेलियर्स आपने फेस कर दिया ना, you don't need any mentor in that. You don't need any mentor because you have a mind, you have a brain which is broad, which is open for mistakes, which is open for improvements, which is open for willingness. Let's give it a try. इस तरह से ट्राई करते, ओके ये ठीक नहीं, इस तरह से ट्राई करते. That is what I have learned. You won't believe ये जो Graham Bell was there, Einstein was there. There are so many scientists हमारे पास में जो 50-100 सालों पुराने वाले साइंटिस्ट है, कितने सारे पॉलिटिशियंस है, कितने सारे ऑथर्स वगैरह है, कितने सारे एंटरप्रेन्योर्स वगैरह. इन सबका एक एक करके कभी कभार I used to read out stuffs and everything. I used to read out the failures. I used to read out everything about them most of the time. But what actually motivated me, or what actually helped me out to reach over here, was my actions, my willingness to do something, my willingness, my dream, my confidence towards my service. एक और चीज मैंने ओवर द पीरियड ये नोटिस की कि सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा इफेक्टिव एक चीज थी, और वो था ओवर द पीरियड मेरा स्पीकिंग इंप्रूव होने लगा. फिर मैंने इस चीज को रियलाइज किया. व्हेन आई वर्कड इनटू द बैंक फॉर 2 years, आई रियलाइज्ड दैट बॉस, दिस इज समथिंग that I really need to work on. I'm a teacher already, like profession, banking, finance, accountancy, management, everything I was teaching simultaneously. You won't believe, 12 hours I was working at the bank, and morning 2 hours I was taking up classes, 2 to 3 hours. And it was a tremendous journey for me, because that initial journey of 21 years से लेके 24 years का जो जर्नी था, 2-3 साल का, इतनी सारी चीजें सीखी मैंने. बट वही जर्नी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग थी, वही जर्नी बहुत ज्यादा इरिटेटिंग थी. And guess what? It was all worth it. Now I can proudly say that. Because people pay me for my words, people pay me for my speaking skills. Above all, people are actually applying our tools and techniques. क्योंकि जो भी experience हम share करते हैं, it is out from our own, things that we have taken, out from our own actions that we have taken. The more action we take up, the better we understand where are we. The better we understand that how much effect are we making into this world. That is where the birth of Dream and India took into the picture, and till date, we are grateful that we are getting a good response. Rejections are happening. Let me tell you that. Rejections are still happening. Don't assume that we are into the top. And जो top पे होते हैं उनके भी rejections होते हैं. Let me tell you that. जो top पे होते हैं उनके भी rejections होते हैं. वो नाम के लिए एक formality, एक system हमने जो बना दिया है जिसमें who's first, who's second, who's third ऐसा होता है. But otherwise, every company, every individual, everyone faces rejection. We have made this into our mind that, yeah, I got rejected.
and we start pitting ourselves and we start doubting ourselves. Analyze yourself. There's a difference between analyzing yourself and doubting yourself. Analyze me, you're open for improvements. Doubting me, you are degrading yourself. Your door is shut. When you doubt yourself, your door is shut towards improvement. Is everyone with me? Yes, ma'am. I have one more this question. How should I start my preparation for the JD at home? Very good question. Very good question. At home की जब बात करते हो ना, families, professors who can be a part of JDs and everything, घर से ही चालू करो. हर चीज अभी घर से चालू होगी. हर चीज अभी घर से चालू होगी. फॉर एग्जाम्पल आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाया है, which is something related to either politics, which is something related to real estate, which is something related to your own subjects that you're studying right now. क्यों आपको बोरिंग लगता है, क्यों आपको अच्छा लगता है, क्या प्रोज एंड कॉन्स है, इसका आप इनिशिएशन लोगों को इनवाइट करके कर सकते. गाइस, नॉट मोर देन 15 to 20 minutes ग्रुप डिस्कशन. और उस ग्रुप डिस्कशन में थोड़े से रूल्स मेंटेन करो. You being the initiator of that group discussion, maintain certain rules that this you have to follow, and let's be to the point. एक और दो सेंटेंस में हर किसी की राय पूछनी है हमने, हर किसी का रीजनिंग आउट करना. भाई आपको क्यों लगता है कि आपने जो कहा है, हर किसी को क्यों 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 पूछेगे ना, तो उस सामने वाले इंसान को भी समझ में आता है वो क्यों बोल रहा है, और हमें भी समझ में आता है कि वो क्यों बोल रहा है. Are you getting me? So this is my take on this. You should absolutely work on that, which is very much important. Yes, guys, just 10 minutes left. Let me tell you about this overview. ये जो सेशन था ग्रुप डिस्कशंस वगैरह के बारे में, छोटे छोटे जो कंसेप्ट्स मैंने आज शेयर किए हैं. मैंने कोई रॉकेट साइंस आपके साथ शेयर नहीं किया है. मैंने फाउंडेशन पे बहुत ज्यादा काम किया है. आई थिंक द डे द फाउंडेशन इज स्ट्रांग, नो पावर, नो एनर्जी, नो, sorry, 1 second guys. Yeah. No power, no energy in this world will stop you from becoming concerned, your failures are concerned. Keep your thought processing open, keep your views open, absolutely, towards whatever your thoughts are. And जितना ज्यादा आप इनिशिएटिव्स लोगे, मैं ये नहीं बोल रही कि बड़बड़ करते ही रहो, पर जितना ज्यादा इनिशिएटिव्स लोगे, उतना ही ज्यादा लोग आपको पहचानेंगे, उतना ही ज्यादा लोगों को समझ में आएगा that you are someone different rather than what we have seen in the past. तो वो यूएसपी आपका फाइंड आउट करना चालू करो, जैसा मैंने मेरा यूएसपी फाइंड आउट किया है कि आई कैन स्पीक वेल एंड आई हैव ओवरकम दैट कॉन्फिडेंस, आई कैन बी वेरी मच डिलीवरेबल. ये चीज मुझे ओवर द पीरियड समझ में आई, ये चीज मुझे इमीडिएटली समझ में नहीं आई, और ये किसी को समझ में नहीं आती. कोई भी चीजें हो, आपका जो भी टैलेंट है, पैशन है, इमीडिएटली समझ में नहीं आता, उसको थोड़ा टाइम लगता है. So you have to give yourself some time. At the same time, you have to grab as much as opportunities as possible to speak. ग्रुप डिस्कशंस में प्लीज काम करना चालू कर दीजिए. जितना हो सके लोगों के साथ बात करना आप चालू कर. Be friends, start from friends and families and everything. The front person is not going to eat you as such. One request from my team and from to everyone over there is please, 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 Happy. And if you talk about Instagram, it's Manisha_Dreamant_India. Please follow us. Okay. And on the other side, if you liked this session, if you didn't like this session, what are your thoughts? What are your views that you learned? Brief में, please, 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 आप एक रिक्वेस्ट है, हमें एक फीडबैक दे दो, क्योंकि ये फीडबैक हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. जो एक स्मॉल चेंज आज अगर मैंने आपके
मिथ आपके थिंकिंग प्रोसेसिंग में अगर स्मॉल चेंज कर दिया होगा, तो यही चीज हम दूसरे बच्चों के भी, दूसरे यंगस्टर्स के लाइफ में करना चाहते हैं। बिकॉज बिलीव मी इतना ज्यादा हमने नोटिस किया है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, इतना ज्यादा नोटिस किया है दैट 10 to 15 इयर्स के एक्सपीरियंस के कॉर्पोरेट्स हमारे पास आके बोलते हैं, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, आई एम नॉट एबल टू grow in my professional life. I'm getting stuck with my PMO and everything. It is happening, guys, just because those people are not well communicable. उन्होंने आपके एज में, लाइक 20-21 ईयर्स के एज में, उन्होंने वो चीजें नहीं की जो आप कर रहे हो अभी, जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है अभी करने के लिए, बट आप नहीं कर रहे हो। तो मैं यही आपको हर किसी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज स्टार्ट टॉकिंग एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि आपको वार्म अप करना जरूरी है अपने आप को। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ओनली दोज पीपल गो फॉरवर्ड हु आर वेरी वेल कम्युनिकेबल एंड वेरी वेल की सालों में आएगी। ऐसा नहीं कि जाते ही बरोबर मैम ने कहा ना वेरी वेल तो मुझे ऐसा बूम करना, नो, डू नॉट हैव लोड ओवर हियर, बट grab as much as possibilities as possible. It's a request to everyone. If you really want to help us out, give a feedback. Be it whatever you understood, whatever you didn't understood, give everything. You understood, you didn't understood, give everything, whatever your thoughts are. So it's a kind of a practice for you also, and it's a kind of an assignment from our side to you. That आपने जो कुछ भी आपको समझ में आया नहीं आया, वो एक मैसेज में, I'm just typing our official contact number. Please everyone save it, please. My team has just now sent me a message that without fail ask them to send a feedback. This is my official contact number. I want a feedback. You can give a feedback to your college as well, so that if they also like our session, they will call us again and again for several other topics. This is our contact number. You can send a feedback, either text message or a WhatsApp message will also do. It's a WhatsApp message. Please do that. Somebody's saying from such a long time, but you don't seem tired at all. Why is this? This is because conviction is connected to it. This is because I have developed that attitude as a speaker, that what I can give to these students today. That is the main reason attached to that. Most of the time, बहुत बार लोगों को ऐसे लगता है that money is the ultimate motivator and money मिलेगा तो ही सब कुछ होगा. I agree. Even I'm into business. I'm an entrepreneur. I know बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पैसा, but पैसा से ज़्यादा quality important. What quality product and service are you delivering so that the customer comes again and again to you? So my take on this is that I make sure that I am highly convicted. You won't believe I have got opportunities from Canada, from US, late night, as per our IST timings, late night mujhe calls आए wherein they want us to take up sessions. And guess what? I have delivered with such kind of conviction only because if I've undertaken this, I make sure that I'm giving my best. And above all, my words are actually making a difference into the life of someone. So that is where, thank you for asking that question. And first time somebody asked me this question. Huh? Thank you so much, everyone. And yes, I'll be expecting a feedback. My team will again revert you back as soon as we receive message, a feedback from you. Thank you so much, Ashwani, for initiating this Zoom webinar. Thank you so much, Shikha. It was great talking to you all, interacting with you all. We are just one call away, as I told you. Dream Hunt India team, you can go to our website, on a YouTube channel. We can definitely help you out henceforth in life as well, be it your personal life problems, be it your professional life problems. We are just one call. Thank you so much. Ashwani, Shikha, would you like to say something? Or should I? Yeah, hello. Am I audible? Yes. Tell me. Yeah, Manisha. So I'm so sorry, I was somewhere else. So are you done with the session? Everything has been covered? I have done that, dear. I have just requested all the students, guys, जो आप मुझे Zoom पे दे रहे हो session, please, I need feedback. Yeah, I'll definitely go through it and I'll ask the student for the feedbacks as well. But I have seen you speaking, I have listened to you sometime, and I found it really valuable. So thank you so much, Manisha, for your valuable time, for taking out time for the session from your busy schedule. I know you are occupied whole day, but you considered my request. Thanks a lot. It was truly nice to have you here, and hope to hear you again soon. Same here. Yeah. Guys, so have a good day. Thank you. On that number, all. Yeah, on that number, please share your feedback as well. Thank you so much, everyone. Sure. Take care. Okay, bye-bye. Bye.